Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is introduction to communication. इंट्रोडक्शन अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड पीपल इन्वॉल्व इन सीवरल एक्टिविटीज़, ठीक है, which involve informal conversation, discussions, meetings, presentations, phone calls, ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गॉसिपिंग, नोट सर्फिंग, चैटिंग एंड सो ऑन। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, या हम जितने भी लोगों को देखते हैं, तो वो सारे के सारे ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हमें पाए जाते हैं। ठीक है, कि एवरी पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग, जो हर इंसान है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। चाहे वो कन्वर्सेशन किसी से कर रहा हो फेस टू फेस, वो किसी से कोई डिस्कशन कर रहा हो, वो किसी के साथ मीटिंग में हो, वो प्रेजेंटेशन दे रहा हो, वो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो रिसीव कर रहा हो, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कुछ भी चल रहा होता है एंड सो ऑन। ठीक है, इन शॉर्ट we need to communicate in order to interact. Communication is one of the essential conditions of social interaction. Without communication, social interaction may not be possible, because human interaction is essentially communicative interaction. It pervades the entire range of social and professional relationship, and plays a key role in our life. It is the reciprocal stimulation and response between individuals, and makes social as well as professional interaction पॉसिबल। ठीक है, ये हमारी थी कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंट्रोडक्शन था, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन है क्या। नो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म कम्युनिकेशन मीन्स। द टर्म हैज़ been defined at various levels as it comes from the Latin words communicare। ठीक है, मीनिंग इसका क्या है, टू शेयर, टू इम्पार्ट और टू कम्यून। Its literal meaning is giving or sharing information. It is this sharing of information that makes the process of communication so important to us, whether it is an informal social situation or a formal academic or professional situation. We need to share information, ideas, and knowledge with others. ठीक है, however, this process of sharing information is a symbolic interchange which is both dynamic and interactive, and results in an exchange of meaning and understanding. Let us look more closely at the whole process of communication. Firstly, communication is a dynamic, interactive process that involves the effective transmission of facts, ideas, thoughts, feelings, and values. वो क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने जो आपके आइडियाज़ हैं, अपने जो आपके ख़यालात हैं, आपके एहसासात हैं, आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो किसी दूसरे के साथ जब आप शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पैसिव एंड डज नॉट जस्ट हैपन। वी एक्टिवली एंड कॉन्शियसली इंगेज इन कम्युनिकेशन in order to develop the information and understanding required for effective group functioning. It is dynamic because it involves a variety of forces and activities interacting over a period of time. The word process suggests that communication exists as a flow through a sequence or series of steps. The term process also indicates a condition of flux and change. The relationship of people engaged in communication continuously grow and develop. Communication is any behavior that results in an exchange of meaning. American Management Association, ठीक है, communication is an exchange of meaning and understanding. Meaning is central to communication, and transmission of meaning is the central objective of communication. So communication begins with the sender sending out message, ठीक है, which are perceived by the receiver, who assigns meaning to them and responds to them accordingly. ठीक है, communication is not complete unless the message is decoded and understood by the receiver. ठीक है, moreover, communication can be considered effective only when the receiver response is congruent with the meaning the sender wanted to convey. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करें, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ symbolic eliciting meaning in the minds of the party participants by making common words. ठीक है,
सो आज हमने क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन उसका क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है।